on my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. Hello guys, welcome back to the channel Vlog Hunger. Good morning from Pokhara in front of Phewa lake. 9 बज गया तो going out to explore the Phewa lake. तो अभी थोड़ा बोटिंग करेंगे, पता नहीं क्या सिस्टम है. रेडी हो रहे, हम हो चुके. इसका थोड़ा बहुत बाकी है, ये भी हो चुका. ये देखो एक छोटा फ्रीज दिया है ये वाला, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता इधर, क्योंकि बाहर ऐसे ही रखने से मान लो कि ये बोतल हम रखे ये ऐसे ठंडा हो जा रहा है. जो बोल रहे थे पिछले वाला वीडियो में हम लोग को जाना है, बेसिकली यहाँ पे इंडियन सिम काम नहीं करेगा, राइट. इंटरनेशनल रोमिंग इज पॉसिबल, लेकिन दूसरे कंट्री में आने के बाद वो थोड़ा दिक्कत है. मेरे को क्या करना था, तो इंटरनेशनल रोमिंग अगर इंडिया में भरा लेते, उसके बाद अगर नेपाल में आते तो शायद एक्टिव रहता है. नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे ये वाला ट्राई. बेसिकली ओटीपी चाहिए मुझे ऑफिस के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए होता है. तो हम लोग को वापस जाना पड़ेगा इंडिया में. पर बहुत कुछ है नेपाल में घूमने के लिए, ये 2 हफ्ता 3 हफ्ता में नहीं होगा. 8 टॉप पीक माउंटेन्स आर इन नेपाल, तो सबके लिए ट्रेकिंग वगैरह होता है. तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि माउंट एवरेस्ट इस बार कवर नहीं कर पाए, लेकिन आएंगे जरूर भाई. तुम्हारे भाई के अंदर में दम है और इसके अंदर में भी दम है, तो दोनों फिर से आएंगे, फिर से करेंगे ट्रेकिंग वगैरह सब कुछ. और अगर होटल के बारे में पूछ रहे हो तो होटल इज गुड इनफ एंड क्लीन एंड नीट एंड गुड इन फ्रंट ऑफ द फेवा लेक. बैल्कनी में बैठ के एंजॉय करो फेवा लेक. नहीं, लेकिन एक बात पता है, हम लोग बैल्कनी में बैठे 10-15 मिनट बैठे होंगे, बाहर ही तो थे हम लोग. और वो जो दिख रहा है दैट इज अ शिव मंदिर. चलो अंदर जाते हैं. बाहर में ट्रैफिक है, ऊपर में भी जा सकते हैं, दैट इज अ टूरिस्ट स्पॉट. थोड़ा ऊपर है तो शायद हम लोग जाएंगे. तो कितना देर से हम ब्लॉग करते रहे, अभी तक इसका पेंटिंग वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है. जल्दी करो. यहाँ पे एक द टेस्ट ऑफ फ्रांस है गाइस, चलो देखते हैं. फ्रांस का टेस्ट लेके आदि यही है कि कहाँ है पता नहीं. ये देखते हैं. लेमन क्या कह रहे हो? लेमन हनी हॉट लेमन हनी. गाइस पीछे अभी जो रेस्टोरेंट था उधर देखो, पीछे वाला है फ्रॉम स्पेन, आई मीन स्पेनियोल. हम लोग जिसमें थे वो वाला था फ्रांस. यहाँ पे वैसे ही है. दिस वन इज जापानीज आई गेस. ये फेवा लेक गाइस, लेकिन पहले शायद और भी ज्यादा. वो देखो एक नाव डूब गया. वो देखो थोड़ा पीछे वाला निकला हुआ है. अरे डूब तो नहीं जाएंगे हम लोग. वहाँ उधर देखो पीछे देखो. It's open, right? Yeah. Okay, so it will take to that side. Yeah. Yeah, not an issue. Even our language is not Hindi. Oh. We speak in Bengali. Oh, right. From West Bengal. No, it's India only, but there's different states. Have you ever visited India? No, I haven't been. Oh, okay. Even you should try it. There are many such places like Sikkim, then Manali. I'm not going out other country because I have no education. That's not an issue. Education is not required to travel. I feel very difficult to go out. Trekking? In Nepal? Yeah. No, not yet. Actually, what was the name? The Chandragiri Hills. It's not. Nagarkot. Yeah, Nagarkot. Actually, we didn't trek over there. We went by bike. Especially now, even if you want to go see mountain, you can rent a motorbike. Yeah. You can go wherever. But now, my time trekking and now trekking. It's different. Very different. Now we want to trek to that from Namche Bazaar to that Lobuche side. Okay. So you stay in Pokhara only or some other place? I grow with this water. We drink this water before. Okay. Now something like 25-30 years we have not drink this. So you pronounce this Phewa or something else? Phewa Tal. Phewa Tal. Tal means lake. There is many lake in Nepal. Many lake, huh? I think in Nepal the biggest one is Pokhara.
Correct. I've heard about that one also. Okay. It will take like 2-3 months to explore full Nepal, you know. Yeah. So from which country does the tourist come over here the most? Like in Pokhara, all over the country people come. If they are not coming here, I think they have bad luck. Yeah, correct. Have you ever visited the base camp of Everest? Have you? Annapurna base camp? No, the Mount Everest. I haven't been to Mount Everest. Okay. Yeah, I've been around Annapurna base camp. Okay. How many kilometers will it take for the trek? To trek? Yeah. Around Annapurna, now it's because you can get motor, so you can always... No, without motor. Without motor, especially my time is 32 days. 32 days? With by the rest. Yeah, of course. When I was searching for that Mount Everest, it was showing like it will take 14 days to go to the base camp. I mean, it covered up the return part also. Yeah, but now you can make trek in one day. So, peak like this, Macha Puchre. Oh. After Macha Puchre, you have Dhaulagiri. Okay. Next one is Nilgiri. All the mountain with reflection here. Oh my God. Drive in evening or in early morning. This one is Dhaulagiri 3, Annapurna 3. Okay, it will start from. There is two different ways. Yeah? Don't go right side, go to left side. Okay, fine. Thank you. Okay, have a nice time. Yeah, sure. It won't take much time, I guess. Let's see. তোমায় ঋতুমা ঝাড়ে রাখিব ছেড়ে দেব না